Before starting the video, I would just request to just hit the subscribe button. Don't forget to watch the video till the end. There are a lot of information coming so far. Ladies and gentlemen, boys and girls, here I'm presenting yet another hotspot of Parvati Valley, which is called Kalga. So we're gonna cover in this video the beauty and the gorgeous village of Kalga, the greenery around it. So how I come here, so how you can start the hike or trek of Kalga. पहले आपको बरशैनी आना पड़ेगा and how you will come to बरशैनी, that you can see in my previous video, which is तोश का. उसमें आपको पता चल जाएगा मैं कैसे आई थी बरशैनी से अगेन यू विल गेट डाउन ऑन बरशैनी बस स्टॉप एंड देन यू विल वॉक टूवर्ड्स बरशैनी बस डैम. सो व्हेन यू कम डाउन टू बरशैनी रिवर डैम, तो आपको दो रास्ते कटे हुए दिखेंगे. वन विल गो टूवर्ड्स तोश एंड द अदर वन विल गो टूवर्ड्स कालगा पुलगा, जो खीर गंगा के लिए भी जाता है. वैसे आप तोश से भी खीर गंगे के लिए जा सकते हैं, दैट इज़ अगेन एक्सेप्शनल. सो वहाँ से आपका प्रॉपर ट्रैक और हाइक स्टार्ट होगा. So this was about the journey from Kasol to Basheni bus dam. ठीक है, so let's without a further ado and without a further talk, let's start our route from Basheni dam to Kalga. Hello guys, so again coming up with a voiceover, but sorry for this short video because that's the only best information that I could cover. I guess I'll be covering a lot about in this video कि best time क्या है, कहाँ पे आप stay कर सकते हैं and distance कितना है, hike का कैसा level है, easy, moderate और difficult, so everything all you just need to know. बाकी और कुछ अगर questions हैं तो just drop your questions in the comment section, so I will answer them very soon. Now to talk about this trek, so this is very easy one trek, and since the distance of a trek is very small, so you can give yourself a lot of breaks and enjoy the feel. But in case इतना भी break मत देना अगर if you guys are planning to visit Pulga and Tulga as well. Don't think that पुलगा तुलगा कालगा से आगे है, because पहले भी मैं भी यही सोच रही थी जब मैं यहाँ आई थी कि कालगा से अगर मैं आगे जाऊँगी so I will reach to पुलगा तुलगा. But Pulga Tulga is on the other side. Kalga is very secluded place. बहुत limited घर हैं लकड़ी के, so नया established है. Also it comes in the hidden gems as well, but it's getting lots of popularity amongst the youngsters. So this is what is all about Kalga, and the best time to do this trek is across, but I would recommend to skip रेनी सीज़न, बीट मिड जुलाई से लेकर अगस्त तक आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. So Kalga being an hidden gem of Himachal is picking up lots of popularity amongst the youngsters as well as in the working people because यहाँ पे net काफ़ी अच्छा आ जाता है. So that is one of the plus point. So it is at an elevation of 2500 meter, which is surrounded with lots of greeneries and forested hill. So by chance if you guys are looking for a stay in this area, so you'll find 4 to 5 sable wood wale guest houses, no hostels, so that will be on the sharing part, so you can work over here peacefully because internet काफ़ी decent है. Most important thing, कैरी लॉट्स ऑफ सफिशेंट कैश बिकॉज दूर तक यहाँ पे कोई ATM अवेलेबल नहीं है, ना ही इतना डिजिटल इंडिया फैसिलिटी है. सो एज यू कैन सी दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ कालगा वेयर द कालगा एंड्स. दिस इज़ हाउ आई completed my trip and was just lying here and enjoying the vibe. So guys, here comes an end of my Kalga tour. So what I learned about Kalga is, so basically पहले यहाँ पे ना मोस्टली है ना पुलगा एंड तुलगा ही मेनली जाना करते थे. तो लोगों ने धीरे धीरे एक्सटेंड किया एंड यहाँ पे लोग थोड़े छोटे छोटे घर, भाई बहुत लिमिटेड घर है कंपैरेटिव टू पुलगा एंड तुलगा एंड तोश. सो यहाँ पे बहुत लिमिटेड घर है.
सो इसलिए एक सेपरेट बना दिया. सो दैट्स हाउ लोग यहाँ पे साथ रहने लगे एक साथ. सो दैट्स हाउ इट्स कॉल्ड एज कालगा. सो very limited houses and it's all covered by the greenery all around. So must visit completely. So Kalga एक बार टूर तो मारना बनता ही है. So that's what I did. I hope you guys will also do the same. You will also explore the beauty of Kalga. In case if you guys wanted to extend, so extend आगे अगर जाएंगे तो वो खीर गंगे का हो जाएगा. अगर पुलगा एंड तुलगा जाना है तो आपको थोड़ा अदर साइड से टर्न लेके जाना पड़ेगा. Well, I try to cover all the beauties and the information about the Kalga. So I hope you guys liked this video. In the end, I just wanted to request that don't forget to subscribe to the channel if you are new to this channel, so that you can stay along with me to the tour of virtual journey. So guys, I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye, take care, travel safe and explore the world.